हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फटाफट इंग्लिश विद अभिषेक सर। आज मैं अपने साथ में लेकर आया हूँ अरिंजय को जैसे आपने बहुत सारी वीडियोस में देखा है। आज हम इनका टेस्ट लेने वाले हैं कि ये कितना सही इंग्लिश बोलते हैं। क्या ये सही से इंग्लिश बोलते भी हैं या फिर ये बहुत सारी गलतियां कर देते हैं। दोस्तों, ऑफ कोर्स यदि कोई भी व्यक्ति लर्नर है तो उसकी गलतियां करने की संभावना है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप सीखना ही छोड़ दें। सीखते रहिए, लगातार वीडियो देखते रहिए और घर बैठे बैठे थोड़ी बहुत प्रैक्टिस भी कर लीजिए। अब हम अनुष्का का टेस्ट तो हम पिछले वीडियो में ले चुके हैं। इस वीडियो में हम अरिंजय का टेस्ट लेने वाले हैं। देखते हैं कि ये इंग्लिश कितना अच्छे से समझते हैं और कहाँ कहाँ गड़बड़ करते हैं। देखते हैं ये इस टेस्ट में पास होने वाले हैं या फेल। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। अरिंजय, आर यू रीडिंग न्यूज़पेपर? No, I'm not reading newspaper. थोड़ा धीरे धीरे बोलें, जरा स्लो करें। आप जल्दबाजी करते हैं, इसीलिए आपकी गड़बड़ हो जाती है। राइट, आर यू टॉकिंग विद अभिषेक सर? Yes, I am talking with Abhishek sir and my dad too. राइट, वेल डन, ही गॉट अंडरस्टैंड दिस। इनको समझ में आ गया कि मुझे कैसे जवाब देना है। सो आर यू ईटिंग ब्रेकफास्ट? No, I'm not eating breakfast. डू यू प्रिपेयर ब्रेकफास्ट? No, I don't prepare breakfast. Does your sister prepare breakfast? Yes, she prepare breakfast sometimes. She prepare breakfast? She prepares. हाँ, राइट, ये गलती आपसे भी हो जाती है दोस्तों। ऐसे ही इसकी गड़बड़ आप भी करते हैं। She prepares, ये इतना क्लियर होना चाहिए कि आपके मुंह से बिल्कुल एकदम क्लियरली सुनाई दे। She prepares breakfast. Does your mom prepare breakfast? Yes, my mom prepares breakfast. Okay. Do you clean the house? No, I don't clean the house. Do you go to school? Yes, I go to school. Okay. Does your sister go to school? Yes, she goes to school. Does your mom go to school? No, she does not go to school. Does your dad go to school? No, he don't go to school. He don't. He does not go to school. Ah, right. He does not go to school. Okay. Did you go to school yesterday? Yes, I went to school yesterday. Ah, right. ये यहाँ पे गड़बड़ कर देते हैं, guys. Did you watch TV last night? Yes, I watched TV last night. Did you eat dinner last night? Yes, I ate dinner last night. Okay. Have you taken a bath? Yes, I have taken bath. Have you changed your dress? Yes, I have changed my dress. Do you speak English at home? No, I don't speak English at home. Does your sister speak English at home? Yes, my sister speaks English at home. Okay. Did you practice yesterday? No, I don't practice yesterday. अनुष्का, बताएं क्या सही होगा? I did not practice yesterday. अरिंजय, नंबर कम हो गए आपके। I did not practice yesterday. Alright. Okay. Do you play cricket? Yes, I play cricket. Does your sister play cricket? No, she does not play cricket. Can you play football? Yes, I can play football. You should play football sometimes. Yes, sir. Alright. Okay. Do you shave your face? No, I don't shave my face. Okay. Does your dad shave his face? Yes, my dad shaves his face. Okay. Did he shave yesterday? Yes, he shaved yesterday. Okay. Did you watch TV last night? Yes, I watched TV last night. What did you watch on TV last night? I watched Tarak Mehta Ka Ulta Chashma last night. You and your sister both watched Tarak Mehta Ka Ulta Chashma last night? Yes, sir. Right. Do you like Tarak Mehta Ka Ulta Chashma? Yes, I like Tarak Mehta Ka Ulta Chashma. Rather, I love it. Why do you like Tarak Mehta Ka Ulta Chashma? Just like that. Right. Okay. Did you worship today in the morning? Yes, sir, I worshipped in the morning today. Do you worship every day? Yes, I worship every day. Do you go to temple? No, I don't go to temple. Does your mom go to temple? No, I don't. No, my mom does not go to temple. Does your dadaji go to temple? No, yes, sir, my dadaji go to temple every day. Go to temple. Goes to temple. Right. आता तो है, लेकिन आप बीच बीच में गड़बड़ कर देते हो। Okay. Do you like this shirt? Yes, I like this shirt. Alright. So guys, जहाँ तक basic English की बात है, तो Arinjay is doing well, but I will still give him 8 marks out of 10.
मैं 10 में से इन्हें 8 नंबर ही दूंगा। आप भी मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आप इन्हें कितने नंबर देना चाहेंगे। यू कैन गिव हिम द नंबर ऑफ योर चॉइस। आप अपनी चॉइस के नंबर दे दीजिएगा। बट ही इज 11 years old and he is not very serious about it. So it will take him some time to be fluent in English, but he is learning and he is making nice progress. So are you making nice progress? क्या आप भी प्रोग्रेस कर रहे हैं? वीडियो को देखने के बाद आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। यदि आप ऐसे ही धीरे धीरे रोज प्रैक्टिस करते जाएंगे तो फिर आपकी इंग्लिश घर बैठे बैठे इम्प्रूव होती जाएगी। मिलते हैं आपसे फिर एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।